भारत की शीर्ष अदालत ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की अपील खारिज कर दी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में LGBTQ अधिकारों के लिए झटका देते हुए समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की अपील को खारिज कर दिया है। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने अप्रैल और मई के बीच मामले में बहस सुनने के बाद मंगलवार को फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने मंगलवार को कहा कि इस मुद्दे पर फैसला करना अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और संसद को विवाह को नियंत्रित करने वाले कानून लिखने चाहिए। चंद्रचूड़ ने कहा, अदालत को न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए उन मामलों से दूर रहना चाहिए, विशेष रूप से नीति पर प्रभाव डालने वाले जो विधायी क्षेत्र में आते हैं। हालांकि चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्य को अभी भी समान लिंग वाले जोड़ों को कुछ कानूनी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, यह तर्क देते हुए कि विषम लैंगिक जोड़ों को दिए गए लाभ और सेवाओं से इनकार करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा, जीवन साथी चुनना किसी के जीवन की दिशा चुनने का एक अभिन्न अंग है। कुछ लोग इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मान सकते हैं। यह अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की जड़ तक जाता है। चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाने चाहिए कि LGBT लोगों को भेदभाव का सामना न करना पड़े, जिसमें कमजोर लोगों के लिए हॉटलाइन और सुरक्षित घर स्थापित करना और उन चिकित्सा प्रक्रियाओं को समाप्त करना शामिल है जिनका उद्देश्य लिंग पहचान या यौन अभिविन्यास को बदलना है। I'm sorry we were a little late. Some ceremonial formalities because we have to regretfully say goodbye to our learned brother in 2 days. So because the Constitution tells us when the time has come. So we were just in a group photograph and other things with the staff and other things. So there are 4 judgments in all in this case. There's a judgment by me. There's a judgment by Justice Paul. There's a judgment by Justice Narasimha. By Justice Bharat, and there's a judgment by Justice Narasimha. So, consistent with the importance of the case, I'll begin by reading out some of our portions. There's a degree of agreement and there's a degree of disagreement on how far one has to go. As I see, the degree of disagreement is on how far we have to go. But I'll read out my judgment, and I'll request Justice Paul to, I shouldn't say I'll read out my judgment, I'll read out parts of the judgment which are relevant. I've dealt with the issue of judicial review and separation of powers. I'll just briefly refer to some of those extracts. The doctrine of separation of powers, as it is traditionally understood, means that each of the 3 organs of the state perform distinct functions in distinct spheres. No branch performs the function of any other branch. Actually, Mr. Sibal, Mr. Solicitor, all of you can take a seat. I mean, you don't have to stand to receive the judgment. It can take a little time, so you can all be seated for a bit. Objection. The traditional understanding of this doctrine, also termed the pure doctrine, does not animate the functioning of most modern democracies. That our constitution does not reflect a rigid understanding of this doctrine has long been acknowledged by the court. In practice, a functional and nuanced version of this doctrine operates, where the essential functions of one arm of the state are not taken over by another arm. An institutional committee guides the actions of each arm. In other words, the functional understanding of the separation of powers demands that no arm of the state reigns supreme over another. The Union of India suggested that this court would be violating the doctrine of separation of powers if it determines the list in this case. The separation of powers undoubtedly forms a part of the basic structure of the Constitution,